Hello guys, केम शो। I'm your host Nishit the way and we are back. Yes, international cricket को अभी हमने कवर करना शुरू नहीं किया है, but we will start that from the test series against South Africa. But in the meantime, 19th December को होने वाला है IPL auction and we as usual are here to present the pre-auction special for all the teams. So without wasting any further time, let's go in. And so joining me again on this pre-auction special, Harsh Thakker. Welcome back. थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। और मैंने प्रीव्यू में भी बोला है कि हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद एक गैप पड़ रहा था, उसको फिलअप किया मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के ड्रामा के साथ। बट बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा, क्योंकि 10 टीम डिस्कस करनी तो सीधा सीधा उस पे ही आ जाते हैं। पहली टीम, लेट्स गो विद द विनर्स ऑफ द लास्ट टाइम, दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स। सो एज यू कैन सी, चेन्नई मतलब काफी एक जो बड़ा नाम रिलीज कह सकते हैं दैट वाज प्लेइंग इन द प्लेइंग 11 लास्ट टाइम वाज अंबती रायडू। बस उसके अलावा देयर वर नो शॉक्स। व्हाट वाज योर टेक? I mean, Ambati Rayudu, so it was obvious because he had announced his retirement. Yeah. And Ben Stokes, I thought was another obvious release because he was going to undergo a surgery. Yes. And there are rumors that next year mega auction होने वाला है. So there Yeah. was no sense in retaining him for 2025. Perfect. So, Perfect. and then of course with some big overseas players coming in the auctions once again, like Pat Cummins, Stark, Travis Head. So we have CSK have freed up some overseas slots by releasing another 3 overseas players. डेफिनेटली। Jamison और Mangala and Pretorius. यस यस, 6 टोटल स्लॉट्स बाकी हैं, उसमें से 3 ओवरसीज के स्लॉट बाकी है और एक हमने देखा है कि धोनी लाइक्स टू प्ले विद एन ओवरसीज फास्ट बॉलर। Yes. तो इस बार काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस है उसमें। और पर्स तो भाई साहब माशाल्लाह पड़ा ही है। तो बिल्कुल इश्यू नहीं है। बट ऑल्सो वन थिंग, डू यू थिंक एम एस धोनी विल प्ले? क्योंकि अभी भी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई है उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि नीज में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है। Yes. Yes. क्योंकि काफी टाइम बाकी है अभी तो आईपीएल को। एंड आई विश धोनी तो खेलता रहे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर में लेके आओ पर खेलते रहो। Even I wish he keeps playing, but नी की रिपोर्ट्स आने के बाद अभी बहुत सारी फोटोज एंड वीडियोस भी आ रही थी वेरी ही वाज प्लेइंग टेनिस। या तो मे बी नी की प्रॉब्लम मुझे लगता है शायद से आईपीएल तक तो सॉल्व हो जानी चाहिए। एंड एक और बात उन्होंने कही थी 2021 की फाइनल के बाद कि he wants the transition to happen under him. यस। So I won't be surprised if Ruturaj Gaikwad ends up leading CSK this time around. या सेम, क्योंकि जडेजा के साथ तो ट्राई कर लिया। अब एक ऑप्शन बच रहा है ऋतु। ऋतु, और ऋतु ने ठीक ही किया था भाई, अपना गोल्ड मेडल लेके आया अपने लिए। गोल्ड मेडल लेके आए भाई, वाइस कैप्टन बने थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी। और उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। यस। तो बहुत बढ़िया। सीएस के बारे में तो ज्यादा कुछ भाई साहब है ही डिस्कस करने को, एकदम सेटल साइड लग रही है। इवन विदाउट एम एस धोनी मैं तो कहूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, मैच कंसिस्टेंटली खेल नहीं पा रहे, तब भी कोई बड़ा गैप नहीं। यस। सो दैट्स व्हाई आई फील के अंबती रायडू के रिप्लेसमेंट के लिए सीएसके में रन आफ्टर शाहरुख खान। या बिकॉज उनकी एबिलिटीज देखी है तो वो भी एक बड़े फिनिशर के रूप में देखे जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आई हालांकि फील आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाए, पर थाला मैजिक कभी भी हो सकता है। अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, शाहरुख खान नेक्स्ट में भी। हाँ, पता नहीं, इतना अच्छा खेले सीधा T20 वर्ल्ड कप में ले जाए हम उनको। क्या पता, कुछ भी हो सकता, कुछ वो नहीं कह नहीं सकते। बट ऑफ कोर्स इसी हिसाब से व्हाट वुड यू रेट 10 में से सीएसके? क्योंकि ऑप्शंस में आई डोंट थिंक ज्यादा नीडेड कुछ है, दे आर गोइंग टू प्रीटी बी चिल आउट। यस यस। लुक, लास्ट ईयर की अगर हम लोग सीएसके की रेगुलर प्लेइंग 11 देखें, उसमें से सिर्फ अंबती रायडू का रिप्लेसमेंट चाहिए। एंड अंबती रायडू के प्लेइंग 11 में बाकी सब आई फील दे विल गो फॉर वन बिग ओवरसीज प्लेयर, मे बी पैट कमिंस। आई फील लाइक पैट कमिंस विल गो ऑल आउट। एंड इधर शाहरुख खान और मनीष पांडे, ये दो के पीछे भागेंगे। मनीष पांडे मुझे इतना नहीं लगा, क्योंकि उनको फिनिशर चाहिए जो मनीष पांडे आई डोंट थिंक कैन प्रोवाइड एट द मोमेंट। बट अगेन मोइन अली hasn't done really well at the top of the order, so maybe Moin can be pushed down to 5 and 6 and
be given a free hand, और एंड मनीष पांड्या शाहरुख खान को किसी को ऊपर स्लॉट अप कर सकते हैं, इवन करुण नायर फॉर दैट फैक्ट, या करुण बिकॉज एम नायर एस धोनी डेफिनेटली या लाइक्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स हु कैन प्ले स्पिन वेल। यस तो ये तीन प्लेयर्स हैं, एंड लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड इनके पीछे भी भागेगी सीएसके, मेरे को लगता सीएसके है। तो आई ऑलवेज फील लव्स ऑलराउंडर्स। मतलब एक जो प्रॉब्लम यस, हमारी इंडियन टीम के साथ है कि ऑलराउंडर्स ही नहीं है भाई साहब, वो सीएसके के साथ हाँ कभी नहीं रही। हाँ एवरीवन यस बैट्स एंड बॉल्स। यस। तो आई फील अभी तो 10 on 10, बिकॉज प्लेइंग 11 में जो एक स्लॉट खाली है उसको भरने के लिए 31.4 CR, तो या सीएसके कैन गेट एनी वन दैट दे वांट, even though एब्सोल्युटली there are teams with more money, but they are not as well placed as CSK in terms of the retained players. यस बिल्कुल बिल्कुल। इवन आई विल रेट देम 10 out of 10, क्योंकि ज्यादा नीड्स नहीं है और नीड्स के सामने जितना पर्स रिमेनिंग है वो बहुत है भाई साहब। मुझे लग रहा है पैट Yes, कमिंस के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे एकदम, क्योंकि yes, बैटिंग भी कर लेता है नीचे आके, बॉलिंग तो भाई साहब बढ़िया कर ही रहा है। yes. और एक वही लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है, भले ही कैप्टन ना बने, पर अगर ऑन Hmm. ग्राउंड ऋतु को भी हेल्प चाहिए तो एक लीडरशिप का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। Yes, yes, yes. और ये पर्स बैलेंस इतना इनफ है कि इफ दे रियली वांट पैट कमिंस, कि पैट कमिंस चाहिए ही चाहिए, तो दे दे हैव द लग्जरी टू, इवन इतना होगा नहीं, बट दे हैव द लग्जरी टू गो टू 25 करोड़ एज वेल। या 25 करोड़ डालेंगे पैट कमिंस पे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो अभी दे विल बी वेल प्लेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक प्लेयर है और मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लेयर लेना है उसके लिए उनके पास 31.40 करोड़ है यस भाई। यस। तो ऑल इन जा सकते हैं, इतनी वेल प्लेस्ड मुझे भी कोई साइड लगी नहीं। सो ऑफ कोर्स सीएसके 10 on 10। बट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टीम दैट हैज बीन क्रिएटिंग सम हाइप, दैट इज मुंबई इंडियंस। हम आप अगर रिटेंशन जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको देख के आप घबराए हुए हैं कि रोहित शर्मा का फोटो क्यों लगा हुआ है, तो हमको भी नहीं पता था कि रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से निकाल देंगे। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कई हद तक कि रोहित शर्मा ने आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद खुद ही बोला होगा कि मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कैन लुक हाँ। बियॉन्ड मी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मतलब बहुत बड़ा नाम हो जाएगा रोहित शर्मा टू सैक हिम एज अ कैप्टन। Hmm. And actually, Mumbai Indians have been known to take these ruthless decisions. या I mean, CSK and Mumbai are similar only in terms of performances and consistency. यस इस sense में they are complete opposites. यस So you never know, because when was the last time MI had three bad seasons in a row? ट्रू I mean, दैट this year they qualified for the playoffs, but they were what, third, fourth in the यस table. यस So third and fourth is not according to the standards of teams like CSK and MI. परफेक्ट या So you never know what happened. बिल्कुल। सो दैट वुड बी शॉकिंग अगर मतलब ऐसा होता है कि भाई रोहित को ऐसा सीधा उन्होंने बोल ही दिया कि भाई आपका हो गया, थैंक यू, हार्दिक पांड्या कम्स इन। बट फर्स्ट ऑफ Yes. ऑल उसके पे डिस्कस करें, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हार्दिक पांड्या ट्रेड? मेरे मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई एम इन द पांड्या फैमिली आई एम वेरी हैप्पी कि भाई साहब जॉब Hmm. में प्रमोशन भी हो गया, सैलरी हाइक भी मिल गई। Hmm. But as a IPL diehard fan, you'll get questions in your mind. Yes, Okay. as a diehard fan, I don't Yes. think this should be allowed. First thing. Yes. Because Ravindra Jadeja got banned in 2010 for doing the Yes, same thing yes. with the same franchise. He was in contact with the same Mumbai, franchisee. yeah, And there were rumors that Mumbai had contacted Shami after this. yep, And Gujarat Titans weren't happy with that. Then they contacted Delhi Capitals, I guess, yeah, for Mitch Marsh and Kuldeep Yadav. yes. So I don't know why the IPL governing council is not taking actions like they did back in 2010. बिल्कुल। That's the मतलब question that comes in my mind. ये तो वैलिड पॉइंट है कि पहले जडेजा को भी इसीलिए बैन किया था कि द प्लेयर इज नॉट डिसाइडिंग फॉर विच फ्रेंचाइजी विल प्ले। Yes. और आप मतलब ऑफ द मार्केट ट्रेड्स और ये सब विद द प्लेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते, और यहाँ पे वही केस हुआ है। एंड जीटी हैज लेट गो। मतलब जीटी भी क्या करती है, अगर आपका कैप्टन खुद आके बोल रहा है दैट आई Yes. वांट टू प्ले फॉर अनदर टीम अनदर फ्रेंचाइज, तो आप Hmm. उनको फोर्स तो करोगे नहीं, बिकॉज इफ यू फोर्स देम द परफॉर्मेंस माइट नॉट बी देयर। Yes. इससे अच्छा आप फिर ले लो वो कैश इन ट्रेड। एंड देयर इज ऑल्सो दैट अनडिस्क्लोज अमाउंट क्लॉज कि ट्रेड में जो 17.5 तो है वो Yes. तो ठीक है, बट अनदर Plus अनडिस्क्लोज X. अमाउंट। सो मतलब जीटी फाइनेंशियली वेरी गुड, हैप्पी फॉर देम, बट Hmm. ये अलाउड नहीं होना चाहिए एज अ फैन पर्सपेक्टिव और अ प्लेयर पर्सपेक्टिव। Yes. This shouldn't be allowed. मतलब ऐसा रिफ्ट के रूमर्स आ रहे हैं जीटी यस, मैनेजमेंट एंड, बट ऐसा आईपीएल चल रहा था तो दिखा नहीं था। एंड रिफ्ट मुझे तो नहीं बिल्कुल लगता, नहीं। यस, हाँ,
कि उनके कोचिंग स्टाफ में कोई ऐसा आशीष नेहरा के साथ मेरे को तो नहीं लगता किसी का भी रिफ्ट हो सकता है। Definitely. और वो शुभमन गिल का वो वीडियो देखा था वेयर ही वाज अपॉइंटेड एज अ कैप्टन एंड ही वाज आस्क्ड यस, व्हाट यस, क्वालिटीज डज अ कैप्टन है, तो वो बोल रहा था फोकस और ये सब, एंड ही आल्सो सेड लॉयल्टी। लॉयल्टी, यस। यस, तो इट्स डेफिनेटली द टॉक ऑफ द टाउन। सूर्य कुमार यादव ने भी ऐसा हार्ट ब्रेक स्टोरी डाली है, तो भाई साहब हमको भी पता नहीं है कि मुंबई में क्या चल रहा है तो वी वेंट विद द सेफ चॉइस ऑफ रोहित शर्मा। इफ सूर्या इज वाचिंग दिस वीडियो, वी नीड वन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एट सीएसके। बिल्कुल, आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, वी डोंट यस। माइंड। एंड सूर्या तो ऐसा प्लेयर है वो सब फ्रेंचाइजी बोलेगी आपको भैया वहां पे दिक्कत हो रही है क्या, इधर आ हाँ, आ जाओ, आ जाओ। जाओ। बट और जसप्रीत बुमराह ने भी डाली थी एक स्टोरी साइलेंस करके, बट आई डोंट थिंक दैट यस, वाज रिलेटेड यस। टू हार्दिक पांड्या, क्योंकि मुंबई ने भी उनकी स्टोरी फिर वो डाल दी। बट कुछ तो हाँ, गड़बड़ गड़बड़ चल रही है भाई साहब मुंबई में। कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ चल रहा है। यस, एंड वन मोर थिंग, जो जीत गुजरात टाइटंस ने लास्ट ईयर जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, यस, उसमें हार्दिक वाज आस्क्ड समथिंग अबाउट हाउ ही बिल्ट दिस फ्रेंचाइजी, या, and he was like there are two ways to succeed in the IPL. One is the model that MI follows, that is buy the best players possible, yep, and the second is CSK, buy players and make them the best ones out there. yep, And he believes in CSK's mantra. yeah, So this was already a direct attack on MI. And after this, within 3-4 months, he ends up joining MI. And within 15 days, he's being named the captain of MI. पैसा बड़ी And चीज Jasprit होती है। Bumrah and Surya Kumar Yadav, I feel like were next in line to become या, captains of MI. So yes, I mean, they were loyal to the franchisee when Hardik wasn't. बिल्कुल, And now that Hardik has done well in another franchisee, they poach him, pay more money, and make him the captain. If I या, were in their place, I would have felt bad as well. नहीं बिल्कुल सही है। और ये तो है ही कि पैसा बड़ी चीज होती है भैया कोई, एंड आफ्टर ऑल द आईपीएल इज टू अर्न द मनी, तो ठीक Yes. है, कुछ कह भी नहीं सकते। बट अनदर ट्रेड दैट दे मेड आई थिंक वाज इंटरेस्टिंग, वाज कैमरन ग्रीन को रिलीज कर Yes. दिया, एंड आरसीबी गॉट देम, पर उस पे हम बाद में आएंगे कि आरसीबी ने क्या किया है क्या नहीं। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैमरन ग्रीन बीइंग रिलीज्ड? Surprising actually, because he did well last year, बिल्कुल, batting at number three, and then again they have done something that only MI can do. या, They poached a player from another franchisee, and to get him to accommodate him into the squad and have a decent purse balance at the same time, they let go a player that did well, genuinely did really well for them last year. बिल्कुल। बट दैट इज एम आई फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब एम आई जो हाँ, हार्दिक ने भी बोला था, दो मंत्रा है उसमें से एक मंत्रा को फॉलो करती है, एंड ठीक है, yes. इट हैज बिन वर्किंग फॉर देम, टाइटल्स तो वो लोग जीते ही हैं। बट अगेन आई वाज सरप्राइज कि मुझे, चलो भनक तो हो ही गई थी कि हार्दिक को लेके आ रहे हैं तो ही वुड बी द कैप्टन, बट टू सी द अनाउंसमेंट कम लाइक दिस ऑन अ स्टोरी और ऑन अ हाँ, just a simple upload that Rohit Sharma is not going to be the captain and Hardik Pandya is going to take over. So a little bit surprise is there. और मतलब इतना भी yes. आ रहा है कि रोहित शर्मा के तो जो डाई हार्ड फैंस है, दे अनफॉलोड एम आई लॉस्ट आई गेस टू, 1.5 या lakh, 1.5 lakh followers. 1.5 lakh subs, And there have been videos of people burning the jersey as well. या, तो एम आई मतलब So, प्लेयर्स का दिल भी तोड़ रही है, फैंस का दिल भी yes. तोड़ रही है। And all this is happening because there hasn't been any statement on Rohit या, Sharma's end yet. यप, That's the thing that is making people believe that he's been sacked and he hasn't stepped down. बिल्कुल, यप। बट विथ एम आई नाउ, what do you think their auction strategy will be? Purse मैं कहूँगा mediocre है 17.75, and I think requirements are still there after doing Yes, such big trades and yes. all. There are Actually, good requirements in the team. they need a good fast bowler to support Yep. Jasprit Bumrah first of all, Yes. and they need a good experienced spinner who can support Piyush Chawla. बिल्कुल, And now again coming to Piyush Chawla, he did well last year, but I mean, yes, you can say that Jasprit Bumrah can consistently do well over the years, but can you say the same about Piyush Chawla? of course not. If मतलब they वो get कितने a years good खेलेंगे वो spinner तो वो to, भी नहीं पता मेरे को तो। yes,
if they do get a good spinner to support him, what's the guarantee that Piyush Chawla will play well? Yeah, And what's the guarantee that Jasprit Bumrah won't get injured? बिल्कुल. और जसप्रीत बुमराह का वो आइडियोलॉजी भी है जो बाकी सारे प्लेयर से कहीं ना कहीं डिफरेंट है, दैट इफ ही फील्स दैट ही इज गोइंग टू बी इंजर्ड एंड देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज इंडियन टूर्नामेंट कमिंग अप लाइक द वर्ल्ड कप coming up, then he'll take a rest from IPL. Yes, because the World Cup starts what, like 15, 20, 25 days Yeah. after the IPL? Yes. So high chances तो है, और यही कि requirements अभी भी काफी है उनके पास. फास्ट बॉलर्स चाहिए, स्पिनर्स चाहिए that can do good over a period of time. Yes. तो वो एक रिक्वायरमेंट जरूर है, एंड द पर्स इज नॉट at the highest level that they would like to be. 17.75 है. So how do you rate them at the moment out of 10? 6.5. Yeah, I'll give 6 or maybe even 5.5 क्योंकि there are going to be a lot of teams going after the fast bowlers in particular this season. And this purse balance isn't enough to get those big names. Yep. So मतलब यहाँ पे वही है कि एमआई की जो थिंक टैंक है या फिर जो सर्च ग्रुप है, उनको डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छे अच्छे निकाल के लाने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी सम ट्रबल. डोमेस्टिक प्लेयर्स भी अच्छे अच्छे निकालते हैं, तो विल दे बी परफॉर्म एट द एक्सपेक्टेड लेवल इफ दिस इज देयर फर्स्ट ईयर, प्लस प्लेइंग एट वानखेड़े, प्लेइंग 7 गेम्स एट वानखेड़े. Yep. So there's a lot to think for the think tank of the MI, but and the new captain and the new captain. बिल्कुल बिल्कुल. But moving on towards the team that was surprised with the Hardik Pandya trade and the fans as well, Gujarat Titans. आप पूछ रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या का फोटो क्यों है भाई साहब यहाँ पे, बिकॉज जस्ट इज ही लुकिंग इन द फोटो मतलब एकदम दुखी, वैसे ही गुजरात टाइटंस के फैंस थे व्हेन दे हर्ड अबाउट हार्दिक पांड्या. खुश हो गए थे, ऐसा हो अरे रिटर्न हो गया एंड 2 आवर्स लेटर बूम. So again मतलब आईपीएल राइटर्स ने अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुई एंड दे आर परफॉर्मिंग सो गुड. So yes, very good, very good. ये आईपीएल but again I राइटर्स. feel GT are still well placed. Yeah, GT are better placed than MI. बिल्कुल GT बिल्कुल. are better placed than MI. Definitely, definitely. One big thing that GT needs is a replacement of Hardik Pandya. ठीक है, शुभमन गिल का फर्स्ट सीजन होगा एज अ कैप्टन, वो देखने लायक होगा हाउ ही टेक्स इट, बट उनके पास बहुत बढ़िया कोचिंग स्टाफ है. अगेन द लीडरशिप इन द टीम एज वेल, केन विलियमसन है एंड एवरीवन इन द टीम, मोहम्मद शामी भी है, सो मच एक्सपीरियंस. तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं लग रही है. जस्ट वन थिंग, दे नीड टू गेट अ गुड ऑलराउंडर. यस, एंड कैप्टन की जॉब तो कहाँ होती है, जब बॉलिंग चल रही है तब होती है मेनली. एंड लुक एट द बॉलिंग अटैक दैट शुभमन हैज एट हिज डिस्पोजल. शामी, राशिद, मोहित शर्मा, नूर अहमद, Josh Little, Sai Kishore at the bench, Rahul Tewatia can bowl, Vijay Shankar can bowl. Look at the resources that he has. बिल्कुल यार. एंड इवन द पर्स दैट दे हैव लेफ्ट, मतलब वो किसी के पीछे भी जा सकते हैं. अगेन जस्ट एज सीएसके, उनके भी पास इतनी बड़ी कोई नीड्स नहीं है एंड दे हैव अ ह्यूज पर्स टू फिल अप दोस नीड्स. I feel like they'll go after Rachin Ravindra to fill Possible. Hardik Pandya. Yep. Because we saw how well Rachin Ravindra batted at Ahmedabad. Yeah. Specifically at Ahmedabad. Remember the first game, New Zealand and England. Yes. I mean, people were surprised to see Rachin Ravindra at 3 as Kane Williamson's replacement. Seriously, and boom, he just hit it out of the off park. that game. He was in he was in a hurry to finish that game. So he's well suited to this pitch actually. बिल्कुल बिल्कुल. Even I think they'll go for Rachin Ravindra or maybe even a player like Shardul Thakur just to keep him in the backups for another players. But again मतलब जिस हिसाब से अभी बैलेंस है, they're looking very very good. Of course हार्दिक पांड्या की पेडिग्री का एक प्लेयर जाना will hurt them somewhere, but again overall team balance इतना अफेक्ट नहीं हुआ है. Yes. And if in my opinion, hypothetically speaking, even if they don't buy anyone at the auctions, they're still well placed to make the top 4 and even the top 2. Yeah, without absolutely. Hardik Pandya. Absolutely. So with that, how do you rate them out of 10? 9.5. Yeah, even just behind CSK. Yep. I would have given 10, but क्योंकि Hardik Pandya just a big name that he is in the pedigree of that player, तो उसकी वजह से I'll give them 9, but still they are looking very very good.
मतलब 2 साल से जीटी ने आई है आईपीएल में एंड दे हैव परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली। जो उनकी कोचिंग स्टाफ है, थिंक टैंक है, दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल और हमेशा वो अनऑर्थोडॉक्स कॉल्स लिए एंड दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर गोइंग टू स्टिक विद इट। एंड इस साल तो हार्दिक पांड्या डिडंट इवन प्ले अ बिग रोल या एंड दे मेड इट टू द फाइनल्स। So yeah, बिल्कुल, that shows the abilities that the team has. डेफिनेटली। And so moving on towards the other team, and that is LSG, another new team in the town. और इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ट्रेड लिया है, that is देवदत्त पडिक्कल from RR. First of all, what do you think about that trade? I think it's an excellent trade. Okay. RR were just not able to utilize his abilities because they had Yashasvi and Joss at the top. Yep. So both the parties were not to be blamed for whatever happened over the last 2 years. Perfect. RR didn't have anyone else who they could have played instead of Devdutt. Devdutt was not playing at the position that he prefers. Yeah. So both were not to be blamed, but Devdutt still is an excellent player. And I feel like if he opens with Quinton de Kock this year, which is going to happen, KL Rahul is going to bat in the middle order. Yep. और उन्होंने कह भी दिया है विद द वर्ल्ड कप इन लाइन, और क्योंकि टेस्ट में भी वो विकेट कीपिंग ही करने वाला है, सो ही इज लुकिंग टू बैट इन द मिडल ऑर्डर। उस हिसाब से आई फाइंड केएल राहुल वेरी वर्सेटाइल। बेचारे को जहाँ पे बोल दो वहां पे खेल लेता है और अच्छा परफॉर्म भी कर देता है। Yes, 5 नंबर पे, आई मीन लुक एट हिज स्टैट्स एट नंबर 5। किसने सोचा था खेल पाएगा? और टी20 में तो एलएसजी के लिए बेनिफिट, अब 19 ओवर से नहीं खेलना पड़ेगा, एक ओवर वो मैदान नहीं जाएगी। And Devdutt also with Quinton de Kock at the top, the way Quinton plays in the power play, Devdutt Padikkal will be able to take his time this time around. Yeah, Because definitely. 2021 की IPL में भी जब he used to open for RCB, it was Virat Kohli who used to take his time and Devdutt had to be the accelerator. Yeah. Then again, he didn't get to open for RR, but this time I feel like this might be one of his best seasons in the IPL. Yes, even I think the same. And again, LSG की पूरी स्क्वाड भी देखें, so again there were no bigger surprises. पहले भी उनकी स्क्वाड काफी वेल प्लेस लग रही थी, अभी भी उनकी स्क्वाड काफी ठीक लग रही है। The big change that they are going to have is the firewall in their coaching staff. गौतम गंभीर नहीं होंगे अब। So that is going to be something unique. और ऑक्शन में तो मेरे को लगता है they'll just need a fast bowler. They'll run after the replacement of Abish Khan. Yep. That's it. And overseas player तो slot भरने के लिए लेंगे वो कोई। बिल्कुल। They don't really need an overseas और player. 2 ओवरसीज के स्लॉट बाकी हैं, उसमें भी अगर आप नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes. और अभी के हिसाब से भी one of Kyle Mayers and Quinton de Kock is sitting out. That's for sure. तो वो दिखाता है ओवरसीज पेडिग्री कितनी है टीम में। Yes. So again, LSG is looking pretty good. 13.15 CR, of course, बहुत कम पर्स है, but requirements ही नहीं है। The team is looking very well placed. अगर वो जाएंगे तो भी कोई डोमेस्टिक प्लेयर्स के पास जाएंगे, I think, just to fill up their squad. बाकी I think they are very good. Yes, they'll need a fast bowler to replace Avesh, and plus we all know Mohsin Khan has been injury prone. So they may run after someone like a Kartik Tyagi. Yep. और LSG का हमने देखा भी है कि यंग टैलेंट को बैक करती है एंड दे गिव देम टाइम एज वेल, तो उस हिसाब से इट्स गुड टू सी दैट। अगेन वेल प्लेस टीम, ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं। मैं तो बोलूं कि ऑक्शन में 1-2 घंटा लेट भी पहुंचेंगे तो भी चलेगा एलएसजी को। तो how do you rate LSG out of 10? 8.5. Even I will go with 8 or 9. ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है नहीं, ऑक्शन में इतना कुछ हंगामा करेगी नहीं इस बार एलएसजी। So yes, that was L. And now moving on towards a team that took up the Cameron Green trade, जिसने पूरी अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट को रिलीज कर दिया कि हमको चाहिए ही नहीं ये बॉलर्स, एंड कंप्लीटली कोचिंग स्टाफ ने भी को भी रिलीज कर दिया। शाहबाज अहमद, वनिंदु असरंगा दोनों है, बोथ हैव बीन रिलीज्ड। उनको बॉलर्स चाहिए नहीं, वो 11 बैट्समैन से खेले। बोले 300 का स्कोर बनाओ, हम 300 चेज करेंगे। बट यप,
RCB, first of all, what do you think about the Cameron Green trade? Oh, I was surprised, bro. I mean, 40 crore है आपके पास, तब समझ आता है कि you've released your fast bowling attack, then you're well placed to get the players that Yeah. you want. And why would you get an all-rounder at 18 crores, at 17 crores? वही Why would you do that now? Did you need an all-rounder in that batting attack? No, you didn't. मतलब इनका मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कोचिंग स्टाफ चेंज करे तब भी स्ट्रेटेजी सेम टू सेम कैसे बन रही है. Yes, yes. ये मुझे And लगता where है will विजय that माल्या ही chemistry? भेज रहे हैं वहां से स्ट्रेटेजी. खाली ये सब है ना, स्कैम है. विजय माल्या ही होते हैं, सब स्कैम है. मतलब कितने कोचिंग स्टाफ चेंज हुए, मतलब बरसों से मैं यही स्ट्रेटेजी देख रहा हूँ कि बैटिंग पे दे गो ऑल इन. अभी भी बैटिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग और बॉलिंग यूनिट है ही नहीं भाई साहब. वीक बोलने एंड के लिए अगेन, उन्होंने कुछ रखा ही नहीं है ही नहीं बॉलिंग जो यूनिट. एक तो कैमरन ग्रीन का ट्रेड के बाद जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, वेयर विल ही बैट? हाँ, He वेर did विल well at number 3 for MI. Rajat Patidar comes back in. He'll be a sure shot number 3. Glenn Maxwell won't be made to bat below 4. And will Cameron Green be suited at number 5 then? मतलब That's the यही है, question. कैमरन ग्रीन नीड्स टू प्ले इन द टॉप 3. कुछ भी कर लो, Yes. Yes. कैमरन ग्रीन नीड्स टू And प्ले इन द टॉप 3. फिर तो वही हो जाएगा, नंबर 4 पाटीदार, नंबर 5 मैक्सवेल, यही होगा लाइनअप. so again, will Patidar be suited if he starts his innings after the power play? Will हाँ, he वो be थोड़ा suited to इश्यू that होगा. number 4 role? Yes. या, वही DDP वाला केस है. हाँ, DDP and RR वाला केस है. या सेम सेम सेम. यस. One thing that can happen now is Virat Kohli shifting down to number 3 and making Cam Green open with Faf. That's the only way that I see him fitting into the 11. Last year, after Devon Conway and Ruturaj Gaikwad, these two were were one of the best pairs, the best एब्सोल्युटली. after या, Devon and Rutu. So I don't see any changes here as well. So if बिल्कुल. Cam Green comes into the 11, he'll bat at 5. That's what I feel. यस. और बॉलिंग भी देखे तो व्हाट डू दे नीड? आई मीन ऑफ कोर्स दे नीड एवरीथिंग इन द बॉलिंग, बट with the all-rounders well placed, I think Maxwell will bowl, Cameron Green will bowl. Yes. And I feel like they'll try to get Harshal and Vanindu Hasaranga at a lower price. But again, in the history of IPL auctions, no team has ever achieved that the player they release, who they've bought for hefty amount, and they've got them back at a cheaper price. आज तक कभी नहीं हुआ भाई साहब ये. Yes. In fact, RCB did it in 2014-15. They bought Yuvraj Singh for 14 CR. They released him to get him at a cheaper price. And their last bid, 14 crores, they got him for in 2014. And their last bid for Yuvraj Singh in 2015 was 15.5 crores. Yeah. So I won't be surprised if Harshal Patel goes for 15 crores this time to RCB. Or Vanindu Hasaranga for that matter as well. बिल्कुल. मतलब आरसीबी पिछली बार भी मुझे याद है हमने ऑक्शन उनका डिस्कस किया था, एंड दे वर लुकिंग ऑल राइट, दे वर प्लेस्ड ऑल राइट इन द ऑक्शन, और फिर ऑक्शन में जाके वो कुछ भी कर लिया था उन्होंने. Every time I think we predict the minimal or just basic approach from RCB, and RCB provides the maximum entertainment whenever they go out. कैप्टन चेंज होता है, कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, the mistakes that they commit at the auction table they remain the same. बिल्कुल इनको बिल्कुल. बॉलर्स दिखते ही नहीं, बैट्समैन ही दिखते हैं. यस. कोई भी मतलब कोचिंग स्टाफ हो, कोई भी ये तो कैप्टन मेरा हो. सीरियसली बहुत बड़ा डाउट है कि इतने कोचिंग स्टाफ चेंज किए, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज क्यों नहीं हो रही? कोई किसी एक कोच ने आके ऐसा नहीं बोला कि इस बार हम प्लेयर्स में बॉलर्स ज्यादा, मतलब उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, या फिर इनका यही हो जाता है कि 7 मैच तो हमको होम ग्राउंड पे ही खेलनी है, सारे बॉलर जिसको भी लेके आए वो तो पिटने ही है, फिर बैटिंग पे ही चलो. और ऐसे थॉट प्रोसेस में यूजी चेल को रिलीज कर दिया. वो तो अभी तक समझ नहीं आता, 2 साल हो गए भैया वो बात को. तो यस, मतलब वो तो मुझे ऐसा लगता था कि वन ऑफ द मेन बॉलर्स है उनका. यस, they felt 6.75 crores for UZ is expensive and they ended up buying Vanindu Hasaranga for 10.75 CR. वही. तो वो तो कैलकुलेशन में दिमाग में बैठता ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आरसीबी डज मेरे दिमाग में बैठता नहीं, बट अगेन व्हेनेवर आरसीबी प्लेस, तो पहले तो ऐसा लगता है कि ये कभी प्लेऑफ्स तक पहुंचेंगे नहीं, और जैसे तैसे करते करते ये साले हर बार प्लेऑफ्स तक पहुंच जाते हैं, और फिर प्लेऑफ्स में वही चोक. दिस हैज बीन द स्टोरी. लास्ट ईयर जब ऐसा लग रहा था तब प्लेऑफ में पहुंचेंगे, तो प्लेऑफ के पहले चोक कर दिया.
गुजरात टाइटंस के सामने शुभमन गिल ने खत्म कर दिया पूरा। Yes. So again, RCB, a team with a lot of heart, but very less strategic. I won't like to say it, but brain. So again, I'll be surprised if they make up a very good squad from here. Yes. और ये टूर्नामेंट के लिए तो अच्छा ही होगा, भले अभी हम कितना भी उड़ा ले उनकी, बट वेन एवर आरसीबी प्लेज तो एंटरटेनमेंट तो आता है भाई। देखो कुछ भी बोलो, हमारे व्यूज भी आते हैं आरसीबी से, तो आरसीबी वी लव यू फॉर वॉट एवर यू डू, वॉट एवर रीजंस वी लव। Yes, yes. I'm sure But you'll win heart and kidneys again this year. yes, of course. But now, what do you think? Of course, bowling unit पूरी लेनी है उनको. What do you think would be the smart strategy plans for RCB this time? They'll have to look past the bigger names. Yeah. That's for sure. Same. Because yeah. the big names like Stark, Pat Cummins, they'll go 14-15. Yeah. और फिर अगर उनके you बाद only needed two players, तो ठीक है, but you need an whole bowling attack. Yes. So you need to play smart. You need to go after names that aren't very sought after, but you believe that they can perform well in your home conditions. Yeah. That the strategy that CSK follows every time is the one that they need to adopt. Yep. Even एक जो प्लेयर उन्होंने रिलीज किया शहबाज आलम, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ था because he was playing well. Yes, he was doing decent, and they traded him to their rivals. They traded him to Sunrisers, and they got Mayank Dagar, I think. हाँ, yeah, they got Mayank Dagar. And Mayank Dagar, I don't know what was the basis of his selection. हाँ, मुझे भी नहीं समझ आया, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर ट्रेड करके सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर ही लिया है उन्होंने. You both are left-hand bowlers, both are left-hand batsmen. Yeah. Shahbaz plays better than Mayank Dagar, so I don't know what happened. Yep. यार, I am completely blank इस बारे में. हाँ, नहीं, आरसीबी का हमेशा यही होता है कि इवन टेकिंग अप कैमरन ग्रीन, आई डोंट थिंक वो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, बट या दे आर लाइक मुंबई यार, मुका भाई आपको हेल्प चाहिए, 17.5 चाहिए, अभी हमारी तिजोरी में से लेके जाओ यार, व्हाट इज लो भले हमारा ओनर बैंक को वापस नहीं दे रहा, हम आपको लेके जाओ. But how would you rate out of 10 for RCB? 4.9. Yeah, I'll go with the same. If you know, you know. Yeah. But इनका हमने बाकी सारी टीम्स का ऐसा कहा कि नीड्स इतने नहीं है, वांट्स इतनी नहीं, और पर्स बहुत है. इनका ऐसा है कि वांट्स इतनी ज्यादा है और पर्स भाई साहब मीडियोकर लेवल है एकदम. वांट्स मतलब पूरी दुनिया की इनके पास है भाई, पर्स ही नहीं. कैमरन ग्रीन को लिया नहीं होता तो यार, I seriously think कैमरन ग्रीन का वो ट्रेड नहीं किया होता उन्होंने, they would have had enough purse left to build that whole bowling unit. And so with that we move on towards RR. Again, एक interesting trade हुआ है आवेश खान का. So what do you think about that? I mean, decent pick, because last year they were one Indian fast bowler short, I feel. They tried Sandeep Sharma with Prasidh Krishna injured again last year. So they tried Sandeep Sharma, then KM Asif was tried. And yes, they weren't really able to find a fast bowler that could support Trent Bolt. So again, I feel like Prasidh Krishna will start this year, but Prasidh Krishna was inconsistent. Both for the national team and for RR in 2022 as well. So I feel like Avesh Khan is a good backup. He'll start as a backup option. Yeah, definitely. And again, एक जो मुझे प्रॉब्लम बरसों से या पिछले ऑक्शन में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई अश्विन आपका बहुत जल्दी खेलने आ रहा है. तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑलराउंडर की जरूरत है. पिछली बार उन्होंने होल्डर को ट्राई किया था, बट ही डिडंट परफॉर्म वेल. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? 14.5 CR में कौन सा ऑलराउंडर मिलेगा? बड़ा नाम तो कोई भी नहीं मिल रहा. अगेन आपको स्काउट करना पड़ेगा डोमेस्टिक टैलेंट में से कोई. यस, डेफिनेटली. और उनका एक ऑलराउंडर हु हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द डोमेस्टिक्स, द लेजेंड, द मिथ, द लेजेंड, रियान पराग. हाँ भाई. I feel like this year there is an opportunity to make him bat at number 3. Because उनका भी DDP जैसा ही हो रहा है. He bats regularly at number 3 for Assam. His state team. And he's performing superb in there. Yes.
Yes, and his strike rate. I mean, he plays 50 Vijay Hazare like he's playing a T20 match. Yeah. And with the ball also is very effective. So this is one very good opportunity to make Riyan Parag bat at 3 and finally prove to the world that the decision to retain him was a good one. Yeah. और पिछली बार भी आई थिंक रियान पराग ने बोला था कि आई एम फिनिशिंग ऑफ द मैचेस। कितने छक्के बोले थे उन्होंने, Yes. कितने कंटिन्यूअस एक मार ओवर रहे में हो? 4 6 चार सिक्स, यस। सो अगेन आवर टारगेट फॉर रियान पराग इज टू हिट 4 sixes इन वन मैच एंड वी विल कंसीडर अ गुड मैच फॉर हिम। तो मैंने तो भाई एक्सपेक्टेशंस काफी लो ही रखे हैं, बट द वे रियान पराग हैज प्लेड इन द डोमेस्टिक, बहुत भाई मतलब फोड़ दिया एकदम डोमेस्टिक तो। Yes. And he's been super consistent over the last 3 4 years. इस साल यप। ही खेला ऐसा नहीं है. But he's just not able to get his preferred batting slot at his franchisee. That's the only problem there. यप। अगेन आरआर के लिए इतना कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। द वांट्स आर देयर, मतलब इतनी बड़ी नहीं है। दे हैव Yes, and डोंट हैव ह्यूज गैप्स टू फिल इट, छोटे मोटे they गैप्स जो। still have या they still have एंड one of the best bowling attacks. They यप still do. यप, आई एग्री, यस एब्सोल्युटली। एंड विद द पर्स ऑफ 14.5 आपका कोई डोमेस्टिक टैलेंट अच्छी तरह से आप अगर ने स्काउट किया है तो यू कैन डेफिनेटली गो आफ्टर दैट। Yes, definitely. 8 on 10. Yep, same. I'll go with 7 on 10. बॉलिंग यूनिट में मुझे उनकी इंजरी प्रोन थोड़ी लगती है, तो बैकअप्स पे डिपेंड करता है, जैसे वो बैकअप्स लेते हैं डोमेस्टिक में से, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो yep, again 7 on 10 for RR and we move on towards the next team. There you go, KKR भाई साहब। सबसे बड़ा तो इनका लिए एक ट्रेड जो हुआ है दैट इज गौतम गंभीर। और गौतम गंभीर भाई साहब चर्चे में चल रहे हैं आजकल, मतलब गौतम गंभीर को पूछा एलएसजी का आपको कोच रहना है या आरसीबी का, एंड इज लाइक केकेआर। आरसीबी का रहूंगा तो फिर झगड़ा कैसे करूंगा झगड़ा मैं? किससे करूंगा? और अभी तो मतलब श्रीशांत को भी उन्होंने बोल श्रीशांत दिया को है लिया है। फिक्सर है। हाँ, श्रीशांत को बोल भी नहीं रहा था भाई, और फिर भी नोटिस श्रीशांत को सर्व हुआ। यस। गौती पावर, गौती पावर। गौती पावर भाई, ये तो मैं कहूंगा रूलिंग पार्टी इज द बेस्ट पार्टी। यस। आगे इस पे ज्यादा मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँ। बट ब्रिंगिंग आवर फोकस बैक टू केकेआर, श्रेयस अय्यर फाइनली कैप्टन बना दिया है उनको। नीतीश राणा वुड हैव टू स्टेप डाउन। नीतीश राणा ने मुझे याद है इंटरव्यू में कहीं ना कहीं बोला था कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई सब कैप्टन से, मैं तो खुश हूँ कैप्टन होके। हाँ, बोला था। अरे बट भाई, अगेन श्रेयस अय्यर, आई मीन ही डिड वेल एज वेल या 2022 में। एंड आई मीन एक इंजरी की वजह से इट्स नॉट फेयर ऑन हिम एज वेल कि उनको या कैप्टनसी से निकाल दे। दिस इज बिल्कुल, व्हाट हैपेंड एक्चुअली विद हिम एट दिल्ली। यस, इंजरी की वजह से ऋषभ पंत टुक ओवर द कैप्टनसी, ही लेड द यप टीम ओनली फॉर हाफ एन ईयर। यप फिर आईपीएल बंद हुई, श्रेयस अय्यर बिकेम अवेलेबल फॉर द सेकंड हाफ एंड ऋषभ पंत कंटिन्यूड एज द कैप्टन। यप यप But that was wrong on him and I am happy कि इस बार केकेआर में that didn't happen. बिल्कुल। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट मीम मटेरियल प्लेयर लिटन दास, उनको रिलीज कर दिया यार, ये क्या ना। अब मेरे शॉर्ट्स बहुत में कौन बिग आएगा? नाम। But I feel like they were very decent team, very decent team. आई थिंक डोमेस्टिक टैलेंट उनका काफी सही है, एंड सुनील नारायण मतलब वो एज नहीं कर रहा है, वो कब से खेले ही जा रहा है, एंड ही And इज just परफॉर्मिंग एज look वेल, at, तो वहां पे भी कोई इश्यूज नहीं है। they have a packed batting order at till 8, till number Yep. 8. Look at Roy and Gurbaz opening, Shreyas Iyer at 3, Venkatesh Iyer 4. Venkatesh Iyer and Nitish Rana can switch 4-5. Yeah. Then Rinku at 6, Russell at 7, and Sunil Narine at 8. Yep. Just look at this batting order now. But who's keeping for you again? Keeping Ramanullah Gurbaz. Gurbaz, yep. Okay, Yes. that works, yes. बट फिर फास्ट बॉलर्स में आई थिंक स्पिन अटैक दैट दे हैव, और ईडन गार्डन्स का बात भी करें अगर, तो Yes, आजकल the वो pitch स्पिनिंग the ट्रैक pitch ज्यादा has हो been गई। relayed. Yes. यस, तो उस हिसाब से आई थिंक सुयश शर्मा जो उनके पास एक टैलेंट है, पिछली बार एक Yes. झलक दिखी थी उनकी, बट He एवरी played सीजन द फास्ट exceedingly well. बॉलर्स सॉरी द Yes. स्पिनर्स विल इम्प्रूव, और उस हिसाब से आई थिंक दे हैव गॉट अ ह्यूज टैलेंट देयर। Yes. और And they also like RCB have released the entire pace attack. yep. But यहाँ पे
it was the right thing to do. एक You can't win चेंज an भी है IPL with अगर आप yes. आरसीबी से कंपेयर करोगे. पर्स देखो भाई साहब केकेआर का 32.7. Yes, and look at the fast bowlers that they have released. Those Yeah. guys released Josh Hazlewood and Harshal Patel. Yeah. They've released Umesh Yadav and Tim Saudi. Yep. So they've done things where, I mean, Gotti is in the think tank. Of course, they've done well. Of course. And गौतम मतलब हम जितना भी उन पे जोक्स वोक्स कर ले बट स्ट्रेटेजिकली ही इज फैबुलस यार. Yes, he's got a fabulous cricketing brain. Yep. तो अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद द केकेआर स्क्वाड जिस हिसाब से चल रहा है और पर्स भी काफी डिसेंट है टू गो फॉर एनी बॉलर्स दैट दे वांट एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड एट द मोमेंट. सो हाउ वुड यू रेट केकेआर? 7.5. 7.5. I'll go with 7 or 8. Again, fast bowlers उनको भी चाहिए and fast bowlers are going to be in demand in this IPL auction in particular. Even So they again, can get one of Pat Cummins and Stark. yeah, पर्स पे आ Pretty जाती well है वो placed. चीज and Yes. yeah, big names में से कोई एक वो आ सकता है वहां पे with the good purse that they have. Again, Yes, KKR looking very sorted and Gautam Gambhir returning to KKR. Gautam Gambhir we all know meme material तो है ही but he has जैसे कि हमने बात किया amazing cricket brain. So Yes, it's very great. sharp. Yep. And even with Shreyas Iyer back, so that batting order is looking fabulous. Yes, fantastic. Yeah. And so with that, we move on towards the next team, and that is Delhi. Again, मतलब huge reports for Delhi that Rishabh Pant is going to play. ऐसा बोलने में आ रहा है कि keeping नहीं करेंगे, but he is going to play. So again, huge positive news. अब कितना परफॉर्म कर पाते नहीं कर पाते वो पता नहीं क्योंकि अच्छी खासी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं. अच्छी खासी injury and the time gap between Yeah. the last competitive game that he played and उस time maybe he wasn't in good touch. Yep. So that is something that remains to be seen. But Yep. if I was Delhi Capitals, I wouldn't risk putting Pant in that leadership chair. I mean, no questions on his leadership abilities, but just that are DC sure that he'll play all the 14 games? Yeah, same, yes. And also, मतलब पृथ्वी शॉ को उन्होंने रिटेन किया है, but I think this is going to be his last chance. Yes, I mean there were reports of rift between Prithvi Shaw and DC management, but I've seen the way Ricky Ponting talks about Shaw in press conferences, and he really admires him, and that's I think is the only reason why he's been retained. But Prithvi Shaw also admires food. Thank God no yo-yo test in IPL. Yes. मैं उन्होंने जो recent वीडियो भी डाला है एक प्रैक्टिसिंग करते हुए वीडियो डाला है पृथ्वी शॉ ने and Delhi Capitals की yes jersey. yes and he is hitting the ball well but fitness point of view से इतना अच्छा नहीं लग रहा है. I mean he gives pretty much a lot of Virendra Sehwag type vibes. Yeah, at kind the moment. of. Yep. Hairstyle से लेके बैटिंग स्टाइल सब कुछ. Yep. So it is going to be an interesting way how Prithvi Shaw plays for them. Again, I feel the same for Rishabh Pant कि captaincy अभी से दे देंगे because we are not sure if he'll be playing all the games or not. Yes. और एक तो इतनी टाइम के बाद इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं तो सीधा इतना ज्यादा प्रेशर डालना क्या वो भी सही है नहीं. But who would you think it could have gone to if not Rishabh Pant? Yep. Warner. Yeah, even I think there's a good leadership there. Yes. और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वार्नर को ही करना चाहिए. Yes, he's an IPL winning captain there. Yeah. Last year he didn't have the resources. Yeah. Neither was he the captain when the auction was going on. So the team wasn't made according to his preferences. Yes. So yes, you can't blame Warner for what happened last year. Yeah. पर वार्नर का ये ना दिल अभी भी हैदराबादी है उसका. But yep, Delhi, what do you think? एक जो मुझे कमी लगती है कि कीपर कौन है इनका. Yes, last year it was Abhishek Porel. Yeah. And again, if Pant doesn't end up playing, they'll have to play a specialist keeper because Porel wasn't able to do anything with the bat last year. Or even if Pant plays, there are reports that he won't be keeping. Yes, and I don't understand the reason behind releasing Phil Salt. I mean, he did well and he was a keeping option as well. Yeah. I just don't understand what happened there. I think वही है ओवरसीज 4 आप कौन से खिलाना चाहते हो उस पे ही रिलीज किया है. Yes. I feel like they should go after someone like Steve Smith. Oh, they really? Need stability in that top order.
And Steve Smith, he's an excellent fielder, leadership material, in quite a good touch with the bat as well right now. इंडिया की T20, इंडिया के सामने T20 सीरीज थी, वहां पे भी एक 50 थी शायद से. या ही कैन अभी बिग एंकर द बैश के इनिंग्स ओपनर वेरी में वेल, भी. मतलब यस. उसके आजू बाजू डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स आप रखो जो दिल्ली के पास है. यस यस. एंड अभी बिग बैश की जो फर्स्ट मैच हुई थी सिडनी सिक्सर्स की, उसमें भी 50 मारी. या प्लस दैट ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन विद रिकी पॉन्टिंग, एंड ही यप प्लेड फॉर दिल्ली इन द पास्ट एज वेल. या आई थिंक that is a good option, but what do you think about their fast bowling unit? They need Indian experienced seamers, but I don't think that is available on the market right now. So Yeah, they'll have to rely on Ishant Sharma and Mukesh Kumar. but yeah, fast bowling definitely lacks at the moment, and Yes. बाकी ठीक लग रही है Spin attack is squad. good. Yes. Yeah, Spin spin attack attack is is good. decent. Kuldeep Yep. and Akshar, yes. Yes. So overall, what do you think about DC? 5 on 10. Yeah, even I'm halfway there, halfway not there, ऐसा है. Yes. So it really depends, or it really will be interesting to see how they go at the auctions. Bowling attack Auctions तो नहीं है, से but even in the batting lineup, if we assume Warner and Shaw open, after that you have Mitch Marsh and three, yeah injury prone. Rishabh Pant not fully recovered from injury. You released Riley Russo, you released yeah Phil Salt. No batting options. हम bowling की बात कर रहे हैं, बैटिंग में भी ऑप्शंस नहीं है. दो yeah जगह true. फुलफिल करनी है चीजें, एंड द पर्स अगर दोनों बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट फुलफिल करने हैं तो 28.95 इज नॉट इनफ. Yeah, true. So I think मैं 5 से एक और स्टेप नीचे जाना चाहूंगा. I'll give them 4. बट अगेन यही है कि रिकी पॉइंटिंग पे भरोसा है मुझे. ऑल Yes, सेड he एंड is डन. another sharp cricketing brain out या there. ही इज सुपर्ब, और उनकी थिंक टैंक भी काफी अच्छी परफॉर्म करती आई है पास्ट में भी. वो हमको वो Yes. चाचा याद भी है जो ऑक्शन टेबल पे धमाल करते हैं. Yes, वो आएंगे इस बार Why? आएंगे. सो अगेन दिल्ली, या आई विल से अभी तो टीम इतनी बैलेंस नहीं लग रही है. फॉर देम दिस ऑक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. यप. एंड सो मूविंग ऑन टू द पंजाब. एंड पंजाब के साथ मैं टीम ऑक्शन से डिस्कस करूं या कुछ भी डिस्कस करूं, इससे ज्यादा मुझे तो यही डिस्कशन होता है कि मैनेजमेंट. प्लेयर्स इनके पास ठीक ठाक हो जाते हैं हर बार. वी थिंक दैट दे हैव अ गुड ऑल राइट लाइनअप, बट येट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट ऑल. Yes. मैनेजमेंट की अगर बात करें तो there was a clear rift between Sanjay Bangar and Priti Zinta back in what 2016-17 when Bangar used to be the head coach of Punjab Kings. Yep. They've brought him back at a position that is above the head coach now. Yes. Director of cricketing operations. Yes. After the rift. So I mean, but चलो वो बात छोड़ देते हैं. At the moment, the squad is looking tremendous. I Yeah, the squad feel is that good. after CSK, they are the strongest on paper right now. ऑन पेपर तो Just मुझे look बहुत at बढ़िया लग रही है. एक ही जो गैप उनको फिल करना है, दैट इज शाहरुख खान. एंड इवन आई थिंक दे हैव द yes, प्लेयर्स टू फिल दैट अप. yes. ऐसा नहीं है कि Just बाहर look ढूंढने at जाना पड़ेगा. the top three. They've got Dhawan, Johnny Bairstow, and Liam Livingston. या And then they've got Jitesh Sharma and Sam Curran down the order as well. एंड उनकी टॉप 5 में ही तुम देख लो ऑलराउंडर्स. लियम लिविंगस्टन Yes, कैन बॉल एंड ही पिक्स अप दोस क्रूशियल विकेट्स. हमने देखा हुआ है वो. yes, एंड अगेन yes. सैम He करन picks तो Sam एक्सपेंसिव Curran. प्लेयर उन्होंने लिया था. And एंड then ठीक है, पिछले साल the इतना नहीं the चला वो. death या bowling of Kagiso Rabada and Arshdeep Singh. ऑफ And कोर्स. the leg spin of Rahul Chahar as well. डेफिनेटली. या सो द स्क्वाड अगेन लुक्स वेरी गुड. स्पिनर में पिछली बार वो हरप्रीत ने भी बहुत बढ़िया किया था. Yes, Harpreet Brar. यस. सो आई थिंक द स्क्वाड लुक्स प्रीटी सेटल्ड. ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कुछ लेने की जरूरत है फ्रॉम द ऑक्शंस. द स्क्वाड दैट Yes, दे हैव लुक्स प्रीटी डिसेंट. yes. But एक ही जो factor है कि what about Shikhar Dhawan? When was the last time he played a competitive game after the IPL? He या hasn't. वो तो है. मतलब ये तो अब तो काफी प्लेयर्स जो मतलब रिटायर करने आ गए हैं. दे प्ले आईपीएल टू आईपीएल एंड Yes. दे मैनेज देयर वर्कलोड, या आप बोल लो दे ट्रेन लाइक दैट कि हम आईपीएल में आके ही खेलेंगे. सो अगेन शिखर धवन, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट ही इज अ हैप्पी टू गो कैप्टन. एकदम Yes. चिल्ड रखते हैं एनवायरनमेंट इन द ड्रेसिंग रूम एज वेल. सो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम देम. एक और रिलीज प्लेयर में मुझे थोड़ा जो सरप्राइज किया था, दैट वाज राज अंगद बावा. उन्होंने बैक करके उनको लिया था राज को.
and they've released him without even trying him much. He played like 1 or 2 games in Yeah, 2022 and उसके बाद he hasn't played. yeah, ठीक है, I mean I don't see any reason behind releasing him, but okay, they don't really need him as well, so he yeah, might be better off somewhere else where the team can utilize his abilities. definitely, definitely. So, what do you think about Punjab? 9.5, just 9.5. behind CSK. Yes. Yeah, I'll give them 9, क्योंकि एक तो मैं काटूंगा भाई मैनेजमेंट का, मेरे को नहीं समझ आता उनका मैनेजमेंट. एक तो मैं उन पे काटूंगा. बट अदरवाइज अगेन जैसा कि आपने कहा, द स्क्वाड लुक्स गुड, एक्चुअली लुक्स गुड. And now, moving on towards the last team, that is Hyderabad. पिछली बार, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस बार के ऑप्शन पे आए उसके पहले, पिछली बार जब हैदराबाद की हमने स्क्वाड देखी थी एज ए पेपर पे, I remember both of us agreeing that this looks like the best squad that we will see. Yes. And मुझे याद है, again I made a point last time that their middle order comprised only of inexperienced, I mean inexperienced in terms of playing the IPL, inexperienced overseas batsmen. Yep. Middle overs is the period where the opposition team is going to bring in their spinners. Yep. And they, I mean, overseas players who not from Asia aren't that good at playing spin. That was my only concern, and that's what happened. Harry Brook, Glenn Phillips, only Henrik Klassen was able to perform out Yeah. of the overseas players of Aiden Markram, Harry Brook, Glenn Phillips, and Klassen himself. Yeah. Only he is the only one who played spin well. That's where the team went into tatters. Yeah, I agree. But इस बार अच्छा लग रहा है. I would say Glenn Phillips, I'll prefer him over someone like Harry Brook, जो उन्होंने किया भी है. Harry Brook को रिलीज कर दिया है, and they've kept Glenn Phillips. Again, I'll actually send Glenn Phillips at, no, I can't even send him to open. It's going to be yeah, Mayank and Abhishek with Tripathi at 3. So Tripathi again, at Phillips 3. will Yeah. have to bat at 5, I guess, with Markram at 4 and Klassen and Phillips shifting 5-6, 5-6. Yeah, definitely. But उस हिसाब से भी again, I'd say the batting looks pretty solid. और bowling तो Actually I does. remember, sorry. Yes, it does look solid. They've got 2 spinners as well now. Shahbaz Ahmed and Mayank Markande did well last year. Then they've got Bhuvi, Natarajan, Marco Janssen, Washington Sundar, Abhishek Sharma can bowl spin. Yeah. Natarajan at the death, Umran Malik. Quite a good squad. Yeah, definitely. और पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि स्क्वाड ऑन पेपर लुक्स फैबुलस, मैं तो अभी भी उस पे ही मेंटेन कर रहा हूँ. The squad on paper looks fabulous, and the purse that they have, 34, and I don't think they need huge gaps, or they have huge gaps to fill. This is one team that will run after Pat Cummins as well after Yep. CSK. Yep. But even without him, the fast bowling is pretty solid. Yes, but they tried Marco Janssen over the past 2 years. Marco Janssen performs a similar role to Pat Cummins. Yeah. Batting, bowling, both. But I feel they'll be tempted by the experience of Pat Cummins. And if they are looking for a left arm option, they'll be tempted with Mitch Stark. Mitch Stark, yeah. So again, how would you rate them? 7, 8. Yeah, even I'll go with 8. I think the squad is pretty good. Purse 34 there, and I'll go with 9. I'm pretty happy with the squad. This is सबसे domestic talent भी है, and they all have performed also. Domestic में भी जो अभी चल रहा है. The only reason I didn't go for 9 is the experience of the overseas players. Yeah. You can do well with young Indian players in the IPL, but you need players who played on these Indian wickets in the past. Yep. And these guys haven't played enough here. Still, I don't know. I feel it's a good mix to have. Yes. So, आप experience अगर ढूंढ रहे हो तो 34 करोड़ में experience आपको मिल जाएगा. So with that we come to the end. And so with that we come towards the end of the 10 team discussion. और जो मतलब सबसे controversial team जो रही है, that is MI. मतलब हमने बात भी की कि players भी heart break वाला emoji डाल रहे हैं. And of course, ठीक है, आगे पीछे लग रहा है, they don't even have the purse. So I'm very excited to see what MI does and what RCB does, क्योंकि RCB ने भाई साहब पूरी bowling unit हटा दी है, and they need a whole bowling unit with the purse that they have. So which team are you looking out for in the auctions?
There will be a couple of teams. It will, of course, CSK because they're entering a mini auction with this much purse for the first time. So, I mean, they'll be the most relaxed team right now. Yeah, 3 or 4 slots to fill, 32 crores in the bag. Don't even need to deviate from the auction plans. They can बिल्कुल. get anyone they want. If they get one player for 31 crores, which is not going to happen, but if they do, still well placed, still one of the Yeah. favorites. Yeah, perfect. Yes. And another two teams are RCB and Delhi. The RCB team and that Delhi. need to make the Nice. smart buys. Yep. They'll be the Interesting. most active teams at the auctions, but they won't be the teams that get the big names. Yeah, So that correct will be that. interesting to see how they build their strategy. The KKR had to do the same last time. Yep. They had what 7-8 crores left and 15 slots to fill. Yep. So any players that you'll be watching out for, of course, there are Pat Cummins, Mitchell Stark. Yes. Another fun fact, Kedar Jadhav by base price 2 crore. Unsold. Unsold. मैं केदार जाधव का लॉजिक यही होगा कि मैं कमेंट्री में से मेरे को ये इतना मिल रहा है, I'll only play if I get more than 2. ये Actually, Kedar Jadhav se I am scared because CSK like 30 plus players, Raido replacement needed, good friend of MS Dhoni, ex CSK player, fulfills all the criteria that CSK need. 30 plus, a father, father, yes, on the verge of retirement. on the verge of retirement, बिल्कुल career बिल्कुल. needs a restart. Yes. Perfect CSK candidate. Yes, I am scared now. We talked about Shah Rukh Khan and Manish Pandey, and in the first match at MS Dhoni will announce just one change from last year's finals. Yes. Kedar comes in for Ambati. And Thala revives Kedar Jadhav's career. Yes, Kedar Jadhav named vice captain for T20 World Cup. Yep. So this is future predictions. But on that note, thank you, Harsh, for joining in on this IPL auction special. Thank you for having me, bro. Yep. And that is all from our side. Please pin down in the comments what team are you supporting and what do you expect from them in the auctions, your favorite players, and much more. Thank you.